Hi, my lovely CBSE learners. How are you all? I hope you all are doing good and taking very good care of yourself. In our today's video, we're going to discuss the identities which are related to polynomials. Now, children, this is extremely important for you all because whenever you are doing any question related to this chapter, mostly the important questions, you are going to need these identities. So we are going to discuss these identities of polynomials. Let's get going. The first identity is alpha square plus beta square. So whenever you have to find alpha square or beta square, you are going to use this identity. Now, what is the identity? It is very simple, children. It is alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. Very simple. See, it is alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. Very simple identity. Just memorize these identities. These are very important, okay? Now, the second identity which we have is of alpha cube plus beta cube. Now, children, what is alpha cube plus beta cube? Again, very simple. Alpha plus beta whole cube माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा. आप देख रहे हो जो भी आइडेंटिटी हो रही है वो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा के टर्म्स में हो रही है. नाउ दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी. मैंने जो भी आइडेंटिटीज लिखी हैं दे आर हाईली इंपॉर्टेंट. ओके, हाईली इंपॉर्टेंट. ठीक है. So this identity is alpha plus beta whole cube minus 3 alpha plus beta. Now the third identity we have is another very important identity. This is under root, okay, under root alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta. Okay, so this is another very important identity. Again, you see that it is in the term of alpha plus beta and alpha beta, right? So this is very important. If your identity is not in terms of alpha beta or alpha plus beta, it is going to be very tough for you to solve it, right? So make it in the terms of alpha plus beta or alpha beta, right? Next, we have the last identity, which is another very important identity. It is quite complicated. थोड़ी सी यहाँ पर बच्चों को समझने में दिक्कत आती है. बच्चे सबसे पहले इसको समझो आप कैसे लिखोगे. देखो, सबसे पहले आप इसको लिखोगे अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर. इसकी डेरिवेशन सिखा रही. अब जब आप ये करोगे तो आप यहाँ पर वो वाली आइडेंटिटी लगाओगे. कौन सी वाली? फर्स्ट वाली आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी लगाओगे. ठीक है, चलो अब ये वाली आइडेंटिटी लगाओ. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लगाओगे. अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, तो आप क्या करोगे? आप करोगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, यहां पर आइडेंटिटी लगाओगे माइनस 2 अल्फा बीटा, आइडेंटिटी लगाओगे इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये वाला होल स्क्वायर कहां जाएगा? नहीं तो, और फिर 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर. यानी कि बेसिकली इस आइडेंटिटी का जो मेन डेरिवेशन है वो ये है. ठीक है, आप जो इसको बार बार डिराइव करोगे वो ये आएगा आपका फाइनल. ठीक है, तो आपको ये पूरा करके दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए कि ये कैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड डिराइव हुआ वो मैंने आपको दिखाया. यानी इसका जो आंसर है वो क्या है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर. ठीक है, डन. Now, when we are done with these 4 identities, let us just revise them because revision is the key to success. Okay. Now, the first question, the first identity is
alpha square plus beta square. The identity is alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. So ये वाली समझ आ गई, इसको हटा दे, चलो हटा दी. Next we have is alpha cube plus beta cube minus so the answer will be alpha plus beta whole cube minus 3 alpha beta, alpha plus beta. इसको भी हटा दे, ये वाली भी आ गई. Good. Next we have is alpha minus beta or beta minus alpha. You can say any. So under root alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta. ये वाली भी आ गई. चलो हटा देते हैं. Next we have alpha 4 plus beta 4 which is this. इसकी तो पूरी derivation भी मैंने आपको करके दिखाई, तो ये तो आपको आनी चाहिए. So now I hope that you are fine with it and you have understood each and every concept. I will see you guys in the next video. Till then, take care, do revise these identities and check out the playlist of Polynomials chapter. Love you all. Bye-bye.